So, dear all students, now we are going to discuss about the Gymnosperm division. This is also very advanced division. और आपने जो प्लांट को काफी सालों से देखा होगा, मतलब ये तो वो वाले प्लांट है जो स्लो ग्रोइंग एंड लॉन्ग लिविंग है, हजारों हजारों साल इनकी लाइफ स्पेन होती है. यस, लेट्स टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म. Gymnosperms are open seeded and slow growing and long living plants. Gymnosperms की जो सीड होती है वो सिंगल होती है, मतलब इनके अंदर इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती. लाइक एंजियोस्पर्म हैव अ डबल कवरिंग, आउटर कवरिंग टेस्टा, इनर कवरिंग टैगमन. Likewise, there is a no covering on the in the gymnosperm. Gymnosperm seeds are open, means naked seed, and they are slow growing organism. मतलब इनकी ग्रोथ जो है, इनकी मेटाबॉलिज्म जो है काफी स्लो है और ये काफी साल तक जी सकते हैं. They are long living plants. They are long living plants. Next, the stem may be unbranched in cycas. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे साइकस जैसे प्लांट, इनमें ब्रांच नहीं निकलेगी. And there are certain plant in which branch is found, like a pinus and citrus. Citrus and pinus are the type of a gymnosperm in which number of branches will be there, but in case of a cycas there will be no branch. समझ रहे हो आप क्लियरली? साइकस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट का एक एग्जांपल है जिनके अंदर हमें ब्रांचेस नहीं दिखेंगी, अनब्रांच होते वो. लेकिन सिड्रस और पाइनस वो वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर हमें ब्रांचेस दिखेंगी. सो दिस इज अबाउट दैट. हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द जिम्नोस्पर्म. आपको याद रहना चाहिए, आप चाहो तो लिख ही लो, मैंडेटरी में कहता हूं, आप लिख लो. क्या ये देखिए, सिक्यूआ सुपरविरेंस, सिक्यूआ सेपेरियंस, दिस इज 366 फीट टॉलेस्ट. ये पूरी दुनिया का सबसे टॉल प्लांट है. मतलब अगर ये पूछा गया जाए कि पूरी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, तो टॉलेस्ट प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म में ही आता है और वो है सिक्यूआ सुपरविरेंस. एनसीईआरटी में इसका सिर्फ जीनस का नाम दिया हुआ है सिक्यूआ. ठीक है, तो पूरा फुल फॉर्म है, पूरा फुल है इसका सिक्यूआ सेम्पेरियंस. ये स्पीसीज है उसकी जिसकी हाइट है 366 फीट टॉल. See the second one, Taxodium mucronatum. It is a 125 feet in girth. Now this whiteboard, I would like to tell you, this whiteboard is a 6 feet. This whiteboard is 6 feet. Just imagine this is a 125 feet in girth. तो ऐसे कितने whiteboard आ जाएंगे? ठीक है, कितने whiteboard आ जाएंगे? नियर अबाउट ऐसे अगर हम देखें तो 20 से 25, 20 से 22, 23 तो आ जाएंगे. इतने अगर व्हाइट बोर्ड अगर ऐसे ही लगा दिए तो कितना बड़ा गर्थ हो जाएगा. तो ऐसा प्लांट है टैक्सोडियम म्यूक्रोनेटम. एंड जेमिया पिजमिया इज अ 25 सेंटीमीटर स्मॉल प्लांट. स्मॉल प्लांट, सो स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज जेमिया पिजमिया. लार्जेस्ट प्लांट ऑफ अ जिम्नोस्पर्म इज अ सिक्यूआ सेम्पेरियंस. and largest plant in girth, that is a Taxodium mucronatum. Remember one more thing, Ginkgo biloba is a living fossil. Ginkgo biloba is living fossil. अब इसे अगर ये living है तो fossil क्यों है? मतलब इनकी काफी कम species है, इसके लिए इनको कहते हैं Ginkgo biloba is a living fossil. Then leaves may be simple, may be compound. इनके leaves may be ऐसे simple हो सकते हैं या तो may be ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं, सामने सामने भी हो सकते हैं. ठीक है. देन रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. देयर आर टू टाइप ऑफ रूट. वन इज अ ट्रू रूट, आल्सो नोन एज अ टैप रूट, एंड सेकंड वन इज अ एडवेंटिशियस रूट. इट इज आल्सो नोन एज अ सूडो रूट्स. तो टैप रूट, इनकी टैप रूट का मतलब क्या होता है? व्हेन द रूट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ रेडिकल पार्ट ऑफ अ सीड, इट इज कॉल्ड टैप रूट और ट्रू रूट. तो इनके अंदर ट्रू रूट्स होते हैं. नेक्स्ट, leaves in gymnosperm are adapted to extreme condition. ये चीज तो है जिम्नोस्पर्म को जो दूसरे प्लांट से काफी यूनिक बनाती है. देखिए, leaves in gymnosperm are adapted to extreme condition. मतलब जिम्नोस्पर्म के जो लीफ है, पत्तियां हैं, वो एनवायरनमेंट के ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन को भी अडॉप्ट कर लेती हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए, टेम्परेचर ज्यादा भी हो गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ह्यूमिडिटी, मतलब जहां पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जहां पे एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा, हवा में पानी ज्यादा, उसे हम कहेंगे ह्यूमिडिटी. एंड देन विंड,
एयर ज्यादा हो, जहाँ एयर मतलब इधर हवा ज्यादा हो, जहाँ पे हवा ज्यादा चलती हो, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो या तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, इन सभी कंडीशन को जिम्नोस्पर्म अडॉप्ट कर सकते हैं. सो जिम्नोस्पर्म्स आर मेड लाइक दैट, दे आर कैपेबल ऑफ लाइक दैट, देयर लीव्स आर एबल टू अडॉप्ट द हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट, दे आर अडॉप्टेड टू द विंड, हाई विंड, एंड एज वेल एज दे आर अडॉप्टेड टू द हाई ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट, इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स कौन से प्लांट है? कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो डेजर्ट प्लांट में आते हैं. इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स विथ अ sunken stomata used to reduce water loss. कॉनिफर्स ऐसे प्लांट है जिनके अंदर लीफ की जो शेप होता है वो ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली वो कैसे बन जाता है? ऐसे नीडल के जैसे बन जाता है. अभी नीडल्स के जैसे बनने का फायदा क्या होता है? जस्ट इमेजिन देयर वाज अ बिग गर्थ ऑफ अ लीफ. So if girth of a leaf is too large, if it is too large, then water evaporation by the transpiration will also be more. And just imagine if this kind of a leaf turn into the needle-like. So girth of a leaf is turned into the needle-like. So they can avoid maximum evaporation of water through the transpiration. And transpiration will be slightly or maximum will be avoided, and ultimately water loss will be avoided. ये कैसे प्लांट होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं? डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो पानी की कमी होने के कारण ये प्लांट अपने आप को ऐसे मॉडिफाइड कर लेते हैं कि लीफ का जो शेप है वो नीडल जैसे बन जाता है, और नीडल जैसे बन जाता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम होता है, अल्टीमेटली वाटर का लॉस कम होता है. देन दे मे बी नॉन फ्लावर, सॉरी, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बट शोज एनिमोफिलस पॉलिनेशन. इनके अंदर फ्लावर तो नहीं है, इनके अंदर एंजियोस्पर्म, सॉरी, जैसे एंजियोस्पर्म में एंड्रोशियम गाइनोशियम सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर में, ऐसे इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर फ्लावर ही नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिनेशन होती है. पॉलिनेशन मेल गैमेट से फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाने के लिए पॉलिनेशन तो लगेगी. अब आप सोचो, इफ देयर वुड बी फ्लावर, देन आइदर इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी, सम बर्ड्स और बैट विल अट्रैक्ट. But there is no flower, so ultimately pollination will take place via wind. It can also take place by abiotic agent like water, but most probably gymnosperms or plants are not on water, they are on the terrestrial ground. And if they are on the terrestrial ground, ultimately pollination will be only one option, that will be the wind pollination, air pollination. Next, secondary growth is present because of what? Cambium. You know cambium? Like see, just this is the vascular bundle in which there is a xylem is present and phloem is present, and between them there is a cambium is present. So between xylem and phloem, if cambium is present, between xylem and phloem, if cambium is present, then such plant will undergo secondary growth. I would like to tell you what is meant by secondary growth. See, if a particular plant came up to the completion of their life cycle, so they can add one more year in their life by adding one cambium ring. So like suppose one plant has a 50 year of life, so they can add you can say ring of a cambium, or you can they can add one cambium ring between xylem and phloem, so they can survive one more year. If they wanted to survive one more year, they can add again one more cambium. So जितने cambium ring ये add करते जाएंगे xylem और phloem के बीच में से, so इतनी उतनी plant की life span बढ़ती जाएगी. So life span of plant can be increased by secondary growth concept, and it can be done by the what? Cambium ring. So guys, 9th number character is gymnosperm. Word was first time coined by the scientist Theophrastus. Theophrastus ने काफी सारे words को coin किया हुआ था. इन्होंने 300 before Christ में Theophrastus साइंटिस्ट ने जिम्नोस्पर्म वर्ड भी इन्होंने काउंट किया, मतलब कॉइन किया होता. देन जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. व्हाट डज इट मीन बाय हेटेरोस्पोरस? व्हेन अ प्लांट प्रोड्यूसेस अ माइक्रोस्पोर एज अ मेल गैमेट एंड मेगास्पोर एज अ फीमेल गैमेट ऑन अ सिंगल प्लांट, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरस. अगर प्लांट सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो तब हम उनको कहते हैं होमोस्पोरस. बट हियर plant are producing male gamete, microspore, female gamete, megaspore, both on same. That's why we are calling them as a heterosporus. Yes, it is not compulsory that on the same plant. It is not compulsory on the same plant. It may be on the different plant. Yes. Then
मेल गैमेट्स इज माइक्रोस्पोर, याद रखिए मेल गैमेट इज माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया which is also known as a male strobili, and female gamete is called megaspore produced in megasporangia as a female strobili. अब आप याद रखिए in case of human being male gametes are sperm produced in testis. Here male gametes are microsporangium produced in male strobili और microsporangia. याद कैसे रखो, देखिए देखो माइक्रो small, sporen, micro means small, spore means gamete means small gamete, mega means large, spore means gamete, megaspore means large gamete. ह्यूमन बींग में देखिए, ह्यूमन बींग में स्पर्म छोटे होते हैं और ओवम बड़े होते हैं ना, सही है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने देखा है स्पर्म्स आर वेरी 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 स्मॉल एंड ओवम इज वेरी लार्ज. So sperm are small, ovum is large. Here also male gamete microspore is small, megaspore female gamete is large. Where microspores are form, माइक्रोस्पोर कहाँ फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में, जिसे हम मेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं. और फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, मेगास्पोरेंजिया में, जिसे हम फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं. तो सिंपल सा लॉजिक है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया आल्सो नोन एज अ मेल स्ट्रोबिलाई. Female gamete are megaspore producing megasporangium also known as a female strobili. So it's very easy topic. Then male gamete carry pollen tube, means male gamete is carried by pollen tube in female gamete and which result into the pollination, which result into the formation of embryo and seed. और एक्चुअली अगर हम देखें तो मेल गैमेट जब कैरी होता है उसे हम कहेंगे पॉलिनेशन, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन. इनके अंदर से पॉलिनेशन से एयर पॉलिनेशन होती है. ये देखें, जस्ट इमेजिन दिस वन इज द फीमेल गैमेट, दिस वन इज द फीमेल गैमेट. तो फीमेल गैमेट में पोलन ग्रेन कैसे एंट्री करते हैं, ये तो फीमेल गैमेट है जनरली, इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल. ठीक है. सो दिस वन इज द लोअर पोर्शन. Now this is the PT. PT stand for pollen tube. So pollen grain is carried by pollen tube and then enter into the ovule, then undergo fertilization and ultimately undergo embryo formation, and at the end there will be formation of a seed. Seed will also have a ovule. So this is about the total topic about the gymnosperm. मैंने पहले आपको 8 पॉइंट समझाए, उसके बाद अभी 4 पॉइंट डिटेल में समझाए. So dear all students, now we are going to discuss about the angiosperm, one of the most advanced and primitive type of a plant body on the earth. सबसे अगर एडवांस, सबसे अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा प्रगति किसी प्लांट ने की हो, सबसे ज्यादा सक्सेस अचीव की हो प्लांट ने, सबसे ज्यादा अडोप्टेशन किया हो प्लांट ने इस अर्थ पे, तो वो होते हैं एंजियोस्पर्म. और सबसे ज्यादा यूजफुल प्लांट जो होते हैं वो भी एंजियोस्पर्म ही होती है. तो चलिए देखते हैं उनके बारे में डिटेल में. फर्स्ट, angiosperms are closed seeded. Closed seeded, they have 2 seed coat. Outer seed coat is called testa and inner seed coat is called as a tegmen. जब हम ओव्यूल के बारे में स्टडी करते हैं तो ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट नाम का एक ऑर्गन होता है, और इंटेग्यूमेंट डबल लेयर होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. फर्टिलाइजेशन के बाद वो डबल कवरिंग बन जाता है किसकी, सीड की. सो आउटर integument becomes a testa and inner integument becomes a seed coat. Yes. So angiosperms are closed seeded flowering plant with a root, stem and branches. Root, stem and branches ये सभी चीजें इनके अंदर होती है. Even तो मैं कहूँगा कि angiosperms are most probably are having a true roots. If in case if they are, you can say dicotyledon or monocotyledons are most probably having adventitious root, tap roots. Second, they ranges in sizes like Wolfia. Size is 1 to 2 mm. Wolfia angiosperm का सबसे छोटा प्लांट होता है, और एंजियोस्पर्म में सबसे टॉल प्लांट जो होता है वो होता है यूकैलिप्टस, अराउंड 100 मीटर टॉल. 100 मीटर टॉल. जिम्नोस्पर्म में सबसे टॉल कौन होता है, जिम्नोस्पर्म टॉलेस्ट प्लांट is a सिक्यूआ, and angiosperm tallest plant is a eucalyptus 100 meter. 100 meter is too you can say long. अगर हम इसे कंटिन्यू देखते जाए तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी. 100 मीटर आसमान को छुएगा इतना.
इतना बड़ा प्लांट होगा. So eucalyptus. Then third one, they provide us food, fodder, fruits, medicine and many more products. सही है ना? We are getting a food from the plants. Plants are also working as a fodder for the number of animals. We are also getting a vegetable and fruits from the plant, and we are also getting medicine. Number of plants are there medicinal plant like a turmeric, ginger, yes, garlic. All these are medicinal plant. No, neem plant, aloe vera plant. They are medicinal plant, and we are getting medicine from that. Yes, and we are also getting many more product from the angiosperm. तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें angiosperm में से मिलती है, प्रोवाइड होती है. Next, male gamete is a androecium and female gamete is a gynoecium. Female gamete is a gynoecium which remain inside the embryo sac. ये देखिए आपको दिख रहा है. Embryo sac have 8 cells, 2 synergids, 3 antipodal, 2 polar nuclei and 1 egg cell. और अगर embryo sac यहाँ पे बताया गया है तो मैं आपको पहले embryo sac डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट. ठीक है, ये देखिए. Generally, female gamete has ovule like that, and inside the ovule is female gamete has a you can say female gamete is a gynoecium which has a 3 part, such as a you can say this is stigma, this one is style, and this one is ovary, and inside the ovary there is a ovule is present. So this is the structure of ovule. Now this ovule have a 8 number of a cell. These 3 cells are called antipodals. Are you getting? These 3 cells are called antipodals. Then these 2 are called synergids, and these 2 are called polar nuclei. I hope so you are able to see in camera. Yes. Then this last one is one egg. So this one is egg. So how many cells are there in embryo sac? So in embryo sac there are 8 number of a cell. These 3 at the top you can see these are called antipodal. You can see their antipodals are 3. And then at the bottom there are 2 synergid cells are there. And just above synergid there is 1 egg. And there are 2 polar nuclei. अब मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा. See, angiosperm have 2 class. One is monocotyledon and second one is dicotyledon. So cotyledon means part of a seed. If a seed get divided into 2 equal parts, then it is dicotyledon. Like मैंगो जो होते हैं, मैंगो तो हम मैंगो खा जाते हैं, फिर उसके अंदर जो गुठली निकलती है जिसके अंदर सीड होता है, अगर हम उस सीड को तोड़े तो उसके अंदर 2 भाग निकलते हैं, 2 टुकड़े होते हैं. तो अगर वो 2 टुकड़े होते हैं तो वो है डाइकोटिलोडोन. जैसे पी होते हैं वटाने, यस, पी, गार्डन पी, ग्रीन पीस के भी 2 टुकड़े होते हैं. ग्राउंड नट के उनके भी 2 टुकड़े होते हैं. तो अगर 2 टुकड़े होते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे dicotyledonous plant. And if a plant do not show 2 parts in the seed, then they are simply called as a monocotyledonous plant. For example, jawar, bajra, rice, wheat, sugarcane, millets, all these are monocotyledonous plant. Next, they shows various type of a pollination. एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन काफी प्रकार की पॉलिनेशन होती है. अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होती है तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली. If a pollination takes place through the wind or air, then we call anemophily. And if a pollination takes place through the insect, like butterfly, moths, honeybee most probably, then it is called as a anemophily. It is called entomophily. Anemophily is the air and entomophily is the insect. And if a pollination takes place through birds, it is called as a ornithophily. आपने ornithology आपने सुना होगा. 2.0 मूवी आई थी रोबोट 2.0. उसमें अक्षय कुमार जो थे वो बर्ड्स के ऊपर उन्होंने पीएचडी की थी. तो उनका एक सीन बताया हुआ था ऑर्निथोलॉजिस्ट
who have done work on ornithology. Ornithology, study of birds. So pollination by the birds is called ornithology. इससे याद रहेगा ornithology. And pollination by the you can say bat. Pollination by the bat. It is called as a chiropterophily. And pollination बाय स्नेल. तो ये इतने अलग अलग प्रकार के पोलिनेशन होते हैं. ठीक है, मैंने आगे एक्सेट्रा इसके लिए क्यों किया है, क्योंकि डिस्कवरी साइंस अगर आप देखो तो काफी अलग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं पोलिनेशन करने वाले. देन पोलन ग्रेन एंटर्स इनटू द स्टिग्मा थ्रू पोलन ट्यूब. इट इज कॉल्ड सिफिनोगेमी. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फीमेल गेमेट है, तो पोलन ट्यूब जनरली ऐसे आती है नीचे की तरफ और पोलन ग्रेन को वहां से लेके अंदर लेके जाती है. तो अगर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर जाता है तो उसे हम कहेंगे सेफेनोगेमी. और हाँ, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू ही अंदर जाता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो पोलन ग्रेन इज एंटरिंग इनटू द egg or you can sorry pollen grain is entering into the embryo's egg with the help of a pollen tube. It is called siphonogamy. Then angiosperm shows double fertilization. ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है. हम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, देखो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है. इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अ सिंगल फर्टिलाइजेशन. मेल एंड फीमेल अंडरगो सेक्सुअल प्रोसेस. मेल ट्रांसफर सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी व्हिच कंटेन billions of a sperm. Now sperm enter into the female body undergo fertilization. मेल का स्पर्म फीमेल के एग के अंदर जाता है, जाइगोट बन जाता है. अब वो जाइगोट मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर एम्ब्रियो, फीटस, ये 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी होगी और उसके बाद क्या होगा, बर्थ होगा बच्चे का. अब जो फर्टिलाइजेशन होती है एक ही बार होती है, फिर उसमें जो बच्चा होता है उस बच्चे को न्यूट्रिएंट मदर कैसे देती है, वाया प्लासेंटल कॉर्ड और एम्बिलिकल कॉर्ड. लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा नहीं होता है. फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होती है और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, और सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एंडोस्पर्म. ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग. मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको. सी this one is a egg and this is polar nuclei. These are synergids. This one is egg and this is 3 एंटीबॉडी. ठीक है. अब जो मेल गैमेट है, दिस इज पोलन ग्रेन नंबर 1. सो पोलन ग्रेन कम्स इनटू द पोलन ट्यूब. सो दिस पोलन ग्रेन बाइंड विथ दिस एग. सो पोलन ग्रेन प्लस एग टुगेदर इट टर्न इनटू embryo. Together it turn into embryo and then pollen grain number 2 bind with a polar nuclei. So pollen grain number 2 bind with a polar nuclei. It turn into endosperm. शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप ये समझ लीजिए. अब आप ये समझ लीजिए, ये फीमेल के 3 एग हैं और ये मेल के 2 पोलन ग्रेन हैं. अब आप देखिए, ये वाले 2 एग साथ में हैं, जैसे हम कहेंगे एग नहीं कहेंगे, ऐसे हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियर. और ये वाला है एक एग और ये मेल की गैमेट है. मेल का पहला गैमेट एग के साथ बाइंड होता है. क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, ये बन जाता है एम्ब्रियो. क्या बन जाता है, ये बन जाता है एम्ब्रियो. ठीक है. सो यू कैन से 1 egg plus 1 pollen grain together it is egg. नाउ इसके बाद फिर क्या आया, 2 polar nuclei. कहां पे, ये देखिए सेंटर पे 2 polar nuclei bind with another pollen grain. It turn into triple fusion, also known as a endosperm, which is nutritive tissue. अब हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर सिंगल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बेबी होता है उसको न्यूट्रिएंट मदर प्रोवाइड करती है वाया प्लासेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड. लेकिन प्लांट में मदर कौन है, प्लांट में न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट में प्लासेंटा जैसा कुछ नहीं. तो प्लांट में न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म. और एंडोस्पर्म कब तैयार होता है, सेकंड फर्टिलाइजेशन में. सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय 1 pollen grain and 1 egg. And second fertilization, second pollen grain and 3 what? 3 second pollen grain plus 3 नहीं, second pollen grain plus 2 polar nuclei. So they turn into 3 cells. Triple fusion also known as a
endosperm, which is a nutritive tissue which gives a nourishment to embryo. So this total are the characters of angiosperm. So dear student, now we are going to discuss about the last topic of the chapter, that is plant life cycle, or you can say alternation of generation. That is actually the one and the same thing, it's not a big difference. So ये है हमारा plant life cycle और alternation of generation. तो सबसे पहले alternation of generation या plant life cycle होता क्या है वो human being में सुन लीजिए. Like in human being there is a male and there is a female, two different gender. They undergo reproduction with each other, sexual reproduction. Male have a sperm from the testis and female have a ovum from the ovary. Sperm and ovum undergo fertilization and then turn into the zygote. Zygote turn into the morula, blastula, gastrula, and finally turn into the embryo and fetus and then child. This from the male and female a new child is formed. This is called लाइफ साइकिल. यस, अब हमें वैसे ही प्लांट में लाइफ साइकिल देखनी है. तो ये देखिए हमारे सामने एक एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है. एंजियोस्पर्म इज फ्लावरिंग प्लांट. नाउ एंजियोस्पर्म हैव अ मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, and endometrium divided into two parts, anther and filament, and female sex organ is called gynoecium, also known as a pistil and carpel, and it has a three parts: stigma, style, and ovary. Inside ovary there is a ovule, and angiosperm generally undergo double fertilization, as I have taught you in angiosperm. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये फ्लावरिंग प्लांट में, मतलब एंजियोस्पर्म में ये देखिए यहाँ पे एंड्रोशियम है मेल सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर दो पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट, और फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम, जैसे हम कार्पेल और पिस्टिल के नाम से भी पहचानते हैं, और इसमें तीन पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब यहाँ पे देखिए एंथर इज अ मेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट. मेल गैमेट आर कॉल्ड मेल गैमेट्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर. They are also known as a pollen grain. Microspore are also known as pollen grain, and they produce from microsporangia, by which process? Microsporogenesis. And here you can see female gametes will be called egg, will also be called megaspore. जैसे मेल में नाम है माइक्रोस्पोर, माइक्रो मतलब स्मॉल और स्पोर मतलब गैमेट, तो यहाँ पे फीमेल में मेगास्पोर. तो मेगा मतलब लार्ज एंड स्पोर मतलब spore matlab gametes. So microspore also called pollen grain, which is produced in microsporangium by microsporogenesis, and megaspore also called egg, which is produced from megasporangium, also known as process is called megasporogenesis. So here you can see this is male gametes, sorry this is female gamete, and this one is male gamete. Then there are so many male gametes, then this is one male gamete, this is male gamete. Now this one is male gamete, this is male gamete you can say, and this one is like female gamete. So male gametes and female gamete undergo which process? Undergo fertilization. अब ये मत सोचो ये स्माइली बन गया, ये स्माइली नहीं, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है. सो ये है फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जाइगोट. सो हेयर वी गो जाइगोट. जाइगोट अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. रिमेंबर, embryo first it look like a heart shape, and then it look like a horse. You can see here a horse, it is looking like horse shoe shape. ठीक है. So then this horse shoe shapes embryo or seed get converted into the new sporophyte, means new plant. So this is life cycle of plant. इसे हम क्या कहते हैं? This is called लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. नाउ आई विल टेल यू लाइफ साइकिल में भी हेप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक ऐसे अलग अलग हो सकती हैं. तो इनके एग्जाम्पल अगर आपको याद रह जाते तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. लाइक अ हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आई विल टेल यू, इट विल बी फाउंड इन सम काइंड ऑफ algae, and example of algae will be volvox, Spirogyra and Chlamydomonas. ये मैं पेन यूज कर रहा हूँ डिजिटल, तो थोड़ा लिखने में
दिक्कत आ रही है, इतनी प्रैक्टिस नहीं मेरी इसके ऊपर. एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज शोन बाय algae such as फ्यूकस. फ्यूकस कौन सी एल्गी होती है? ब्राउन एल्गी होती है. एक तो होता है फ्यूकस, और इसके बाद इसमें जिम्नोस्पर्म में भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और एंजियोस्पर्म में भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है. ठीक है. एंड देन फाइनली अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो इट इज फाउंड इन Bryophytes, it is found in Terenodophiles, it is also found in Ectocarpus and found in it is found in Polycyphonia. So this is the haploid life cycle, diploid life cycle, haplodiploid life cycle. अब main difference क्या होता है? Haplontic life cycle means only they are haploid. Diplontic life cycle means haploid plus diploid, and haplodiplontic cycle in a particular stage they are haploid and in a particular stage they are diploid. Thank you so much. हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स. तो अब इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन, मतलब पूरे चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पूरा का पूरा आपको 10 से 15 मिनट में रिवाइज करवाने वाला हूँ. तो ये हमारा लेक्चर है रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड CBSE, दैट इज अ प्लांट किंगडम. सो लेट्स बिगिन विद अ रिवीजन. सो plant kingdom is the member, means plant kingdom is the member of a Whittaker's classification. We know that R.H. Whittaker scientist has classified every living organism into the 5 kingdom, like kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Fungi, kingdom Animalia. तो हम आज किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, हमने पूरा चैप्टर में मैंने जो आपको प्लांटी के बारे में बताया वही हम रिवाइज करेंगे. सो R.H. Whittaker classified all the organism into 5 categories based on some important characters. So plant also have some important characters, like all the members of a kingdom Plantae are eukaryotic, most probably multicellular. Some are you can say exceptional example of unicellular, like a chlorella algae, but most probably they are multicellular. They are eukaryotic, multicellular, and they are producer, they are chief producer on earth. They are the maximum producer on the earth. Maximum food material produced by photosynthesis, from capturing light energy and converting to chemical energy by photosynthesis. It is done by the plant, because plant have a photosynthetic machine called leaf or chloroplast, which have a pigment which attract light, that is called as a chlorophyll pigment. So everything is, this is about the plant. Plants are autotrophic in nature, as they produce food material. They are producer in the life cycle. They are producer. Basically, if you classify every plants into the particular group, so you will have some method of classification. Like I'll tell you, artificial method of classification, in which plants are classified based on the only morphology character, means how it looks from outside, morphological character. Second, natural classification system, which was given by the George Bentham, and you can say Joseph Dalton Hooker. We commonly call them Bentham and Hooker. Natural classification system of plant, which is based on anatomical character, means internal character. Phytochemistry means phytochemistry का मतलब होता है बेसिकली के अंदर, प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं. It is also based on the embryological character as well as internal tissue organization. ठीक है. And then there is a cytotaxonomy, means classification of plant based on the structure, shape and number of chromosome. Then chemotaxonomy, classification of plant based on chemical constitute in the plant. Then we discuss you can say we call numerical taxonomy. Numerical taxonomy, classification of plants based on coding, barcoding and decoding of plant cells and their classification. And then we discuss phylogenetic classification, classification of plants based on phylogenetic relationship between the
two organism among the same species. It's called as a phylogenetic relationship. Then we classified every plant into two categories. Like first is a cryptogam, means spore producing plant. Then second one is phanerogam, means seed producing plant. Cryptogams are those plants which produce spore, and from spore new plant is produced. And phanerogams are those plants which produce a seed, and from seed a new plant can form. Cryptogam further divided into three categories: algae, bryophytes, and pteridophytes. Algae, they are commonly called as a thalloid plant just because they cannot be differentiated into root, stem and leaves. That's why they are called as a thalloid plant. And then bryophytes, they are also called as an amphibian plant. And according to the amphibian plant in bryophytes, according to the amphibia in plants, yes, bryophytes are amphibian plants just because they are requiring water for completion of their life cycle as well as fertilization. So they are called as an amphibian plant. And third I mean to say pteridophytes. Pteridophytes were the first vascular plant on the earth. They were the first plant in which xylem and phloem tissue was found. It was noticed, and it was a workable notice. That's why it is called as the first vascular plant on the earth. They were the plant which was before the angiosperm and gymnosperm. Yes. अलगी को हम थैलोइड प्लांट कहते हैं क्योंकि उनके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट कहते हैं जस्ट बिकॉज के उनको वाटर की ज़रूरत होती है उनकी खुद की प्लांट लाइफ साइकिल, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट करने के लिए, और उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, तभी उनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स। और ये हमें मॉइस्ट प्लेसेस में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे पानी हो, नमी हो, यस, मॉइस्चराइज हो। टेरिडोफाइट को हम कहते हैं फर्स्ट वास्कुलर प्लांट ऑन द अर्थ, क्योंकि ये पहले वो प्लांट थे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्लियरली पाए गए थे, तभी हम इनको कहते हैं फर्स्ट वास्कुलर प्लांट ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद फेनोरगैम मतलब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। सो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आते हैं। उसमें एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट है जिनके अंदर सीड को कवरिंग किया गया है, डबल कवरिंग, आउटर कवरिंग यू कैन से टेस्टा, इनर कवरिंग टेगमन। और जिम्नोस्पर्म वो वाले प्लांट है जिनके सीड के ऊपर कवरिंग नहीं है, ये ओपन सीडेड है, नेकेड सीडेड है। और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं। यस, angiosperms are flowering plant and gymnosperms are non-flowering plant. Plus angiosperm seed is covered by the double layer, outer covering testa, inner covering is called tegmen, so it has a two covering. And gymnosperm is open seeded or naked seeded, do not show any covering. Then comes to the first division, that's called algae. तो मैं इनके बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने कैरेक्टर में सब डिटेल में देख लिया हुआ है, तो मैं क्लासिफिकेशन ऐसे जाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था अलगी। अलगी वो कैटेगरी के प्लांट हैं जिनको हमने थैलोइड कहा, और इनके अंदर अलग अलग प्रकार के अलगी आते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई अलगी के अंदर ग्रीन पिगमेंट है तो उनको हम कहते हैं ग्रीन अलगी, जिससे साइंटिफिकली हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। अगर कोई अलगी के अंदर ब्राउन पिगमेंट है जैसे फुकोक्सांथिन है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन अलगी के अंदर, तो फुकोक्सांथिन ब्राउन अलगी के अंदर जो उनको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, तो उनको हम कहते हैं ब्राउन अलगी। और अगर कोई अलगी के अंदर फाइको इरिथ्रिन कंपाउंड है तो वो उनको रेड कलर प्रोवाइड करेगा, तो वो अलगी होगी रेड अलगी। इफ अलगी हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट दे आर कंसिडर्ड एज अ ग्रीन अलगी, कॉमनली वी कॉल मीन साइंटिफिकली वी कॉल देम क्लोरोफाइसी, क्लोरो ग्रीन फाइसी अलगी, क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी। एंड इफ अ particular algae have a brown pigment like a fucoxanthin, then they are brown algae. Scientifically we call them you can say phaeophysi. And then if a algae have a red pigment like a phycoerythrin, then we call them red algae. Scientifically we call them rhodophysi. So chlorophysi green algae, phaeophysi brown algae, and rhodophysi red algae. Then we discuss about the bryophyte, amphibian plant. Amphibian plant where amphibian plant also have two different means category. Which category? Like a vegetative plant and thalloid plant. There are certain amphibian plant which are same like algae, means you cannot differentiate between their roots, stem and leaves, and therefore they will be called thalloid plant obviously. But there are certain bryophytes which are having a root, stem and leaves, so they are commonly called as a vegetative plant. तो ब्रायोफाइट्स में भी थैलोइड प्लांट जैसे भी हैं और वेजिटेटिव प्लांट भी हैं। ब्रायोफाइट्स के मेनली दो कैटेगरी आते हैं, एक आती है लिवरवर्ट्स और दूसरी आती है मोसेस, लिवरवर्ट्स और मोसेस। उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स।
टेरिडोफाइट को जैसे हमने उनको कहा दे वर द फर्स्ट वॉस्कुलर प्लांट, उनके 4 क्लास आते हैं, लेकिन हमने उन क्लासेस के बारे में स्टडी नहीं करना है हमारे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में चारों क्लासेस के नाम दिए हुए हैं नीचे, लेकिन हमने उनके बारे में स्टडी नहीं करना है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स आर दी यू कैन से स्लो ग्रोइंग एंड लॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। 1000-2 साल जीने वाले प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म। इतने डेकोरेटिव होते हैं, फ्लावर नहीं होते उनके अंदर, फर्टिलाइजेशन होती है सिर्फ एयर के थ्रू, विंड द्वारा पॉलिनेशन होती है उनकी। और सबसे बड़ा अगर जिम्नोस्पर्म देखें तो सेक्यूआ सुपरविरेंस होता है। सबसे छोटा अगर जिम्नोस्पर्म देखें तो वो होता है सबसे छोटा जेमिया पिजिमिया, एंड सबसे बड़ा गर्थ में 125 फीट होता है नियर अबाउट, टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम। और उसके बाद एंजियोस्पर्म, सबसे सुंदर ब्यूटीफुल प्लांट, यस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जिनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्लोज्ड सीड, डबल कवरिंग आउटर टेस्टा इनर टेगमन, एंड सीड is a closed and plus they are flowering plant. They are having 2 category such as a monocotyledon and dicotyledon. If a seed is divided into 2 part, then it is called dicotyledon, and if a seed is not divided into 2 part, then it is called monocotyledon. Dicotyledon like a pea, groundnut, mango, and monocotyledon like a jawar, bajra, maize, wheat, rice, sugarcane, etc. etc. ज़्यादातर मिलेट्स में वो आते हैं मोनोकोट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा प्लांट लाइफ साइकिल। Plant life cycle. Plant life cycle is generally divided into 2 phases, like a sporophytic generation which is a diploid, and gametophytic generation which is a haploid. Sporophytic generation is diploid and gametophytic generation is haploid. This life cycle is called alternation of generation. So it was a very short revision about the complete chapter, chapter number 3, plant kingdom from 11th standard CBSE. Now let's go for MCQ practice. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर द नीट प्रिपरेशन। ठीक है, यस आपने सही सुना। इस वाले वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, इस चैप्टर के ऊपर मैं 50 एमसीक्यू सिलेक्टेड एमसीक्यू आपको समझाऊंगा डिटेल में। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, उनके चारों ऑप्शन का मतलब समझाऊंगा और उसके बाद एक आंसर उनका एक सिलेक्ट करके बताऊंगा कि क्यों ही उसका आंसर वो है। और आप ये खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ ऑल्सो। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द नीट स्टूडेंट, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू सिक्योर 360 मार्क्स इन बायोलॉजी। यस, बायोलॉजी 360 का ही होता है, लेकिन आप 360 भी निकाल सकते हो। इस वाले चैप्टर में से 2 से 3 एमसीक्यू आते हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन यू। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द classification of plants into the 2 different group like a cryptogam, phanerogram. Cryptogam spore producing plant include algae, bryophytes and pteridophyte, and phanerogram seed producing plant include angiosperm and gymnosperm. Gymnosperm open seeded and angiosperm close seeded. फिर हमने देखा algae, bryophyte, pteridophyte, angiosperm, gymnosperm, plant life cycle we called alternation of generation in detail. अब उसके ऊपर हम 50 MCQ select कर रहे हैं। Let's start. Question 1. Algae are placed in. So in a chapter I taught you thallophytes are those organisms in which there is only thalloid organism is present. What is thalloid? When the plant body is not differentiated into root, stem and leaf, such plant body is called as a thalloid plant. और हमें पता है कि algae में हमें root, stem और leaf नहीं देखते हैं, तो algae कौन से organism हो गए? Algae हो गए thalloid. So first answer of first question is a thallophyte. Question number 2. Tracheophyta includes. So who are the Tracheophyta? Yes, Tracheophyta includes all the vascular plant. मतलब जिनके अंदर भी xylem और phloem tissue पाए जाते हैं वो basically Tracheophyta कैटेगरी में आते हैं. So Bryophytes and Pteridophyte no. Pteridophytes have a vascular tissue like xylem and phloem, but Bryophytes don't have. Here Pteridophytes have a vascular tissue and Gymnosperm are also having. So answer could be the B. पर हम और आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे बोथ आर आल्सो कंटेनिंग बेसिकली वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। सो बी आंसर तो है, सी भी है।
But D answer, which include pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, all. So D answer is most suitable, correct. The reason is that pteridophytes were the first organism which with xylem and phloem tissue was found. Gymnosperm and angiosperms are also containing xylem and phloem. So tracheophyte includes all. So answer will be D. Question number third. Natural system of classification consider. So what natural system of classification consider? Actually, natural system classification consider external as well as internal features of plant. It also consider ultrastructure and anatomy of plant. And yes, it also consider embryology of the plant and phytochemistry of plant. So answer will be all of above. Question number 4. Let's move towards 4. The system of classification of a plant proposed by these two botanists is claimed to be natural system. तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्लासिफिकेशन प्लांट की क्लासिफिकेशन की जो सिस्टम है वो कौन से दो बोटेनिस्ट ने क्लेम की हुई थी, मतलब कौन से दो बोटेनिस्ट है जो क्रेडिटेबल पर्सन है जिन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था. बेंथम एंड हुकर वर द बोटेनिस्ट, दे हैव क्लासिफाइड दिस सिस्टम. एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस ने, ये दोनों में से एक ही बोटेनिस्ट है. जॉन हंटिस्टन एंड तख्तजन एंड इग्लर एंड प्रेंट. सो इसका आंसर हो जाएगा ए. बेंथम एंड हुकर ये दोनों फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट को क्लासिफाइड किया हुआ है. सो आंसर इज ए. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजी, information like chromosome number, structure and behavior. It is. So actually classification based on the information of chromosome number, structure and behavior. So here I would say answer is a B, cytotaxonomy. Why I would say B answer, cytotaxonomy? Because chromosome number, structure and behavior, it will be present inside the cell cytoplasm. So taxonomy based on the cytology. Taxonomy based on cytoplasm. What is a taxonomy? Taxonomy is nothing but the method of classification. And here we are discussing about the cytological taxonomy based on the number of chromosomes, structure and behavior. So I would say cytotaxonomy is the correct answer of question number 5. So moving towards the question number 6. Read the following statement and find out the incorrect statement. हमें correct नहीं, हमें incorrect ढूंढना है, ठीक है, wrong option ढूंढना है. Algae usually reproduce vegetative by fragmentation, asexually by formation of different type of spore, and sexually by formation of gametes. ये वाला तो स्टेटमेंट सही है 101%. Algae vegetative reproduction fragmentation से करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल के लिए. गैमेट्स होते हैं अल्गी में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं. अल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. Pteridophytes in 4 classes and angiosperm in 2 classes. Correct है. Algae are divided into 3 groups: green algae, brown algae and red algae. Angiosperms are classified into 2 groups like monocotyledon, dicotyledon, और pteridophytes में भी 4 क्लास होते हैं. The second option is also correct. Third, algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organism. Algae are chlorophyll bearing, correct, simple thalloid autotrophic. Thalloid means not differentiated into roots and leaves, and they are autotrophic, correct, and they are largely aquatic organism. Yes, ये दुनिया में जितने भी समुद्र है सी, तो उनमें से मैक्सिमम अलगी पाई जाती है. तो ये भी स्टेटमेंट 101% करेक्ट. फोर्थ, the plant body of algae is more differentiated than the bryophytes. No, plant body of algae is not differentiated more than bryophyte. Bryophytes में कुछ thalloid भी होते हैं, कुछ plant body भी होते हैं, लेकिन algae most probably thalloid होते हैं. So I think so D is the semi correct answer. So we will say D will be the wrong answer, and we have to select the incorrect statement. So D is the correct answer. Question number 7. Phycoerythrin pigment is found in phyco. मैंने आपको पढ़ाया था. Phyco is nothing but the study of algae, like phycology study of algae. So phyco indicates algae and erythrin indicates red color. So phycoerythrin indicates red algae. So red algae will be the correct answer. Yes. So question number 8. In contrast to algae, fungi are. तो fungi क्या है? Are multicellular, have a chitinized cell wall and are non-chlorophyllous.
एक्चुअली आर मल्टी सेल्यूलर, अलगी भी तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत से अलगी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो फंजाई भी मल्टी सेल्यूलर, अलगी मल्टी सेल्यूलर, तो ये वाला तो सेम है, हमें कॉन्ट्रास्टिंग ढूंढने हैं। हैव अ काइटिनाइज्ड सेल वॉल, algae are made by the cellulose, but here cell wall of fungi is made by chitin, so this is contrasting character as compared to fungi. B is the correct answer. Third हम देखते हैं, are non chlorophyllous, correct. Fungi are also non chlorophyllous, they are not doing photosynthesis, so B and C are correct, but D option says both B and C, so we will prefer more D as compared to the inducer B or C, so हम select करेंगे D वाला आंसर, both A and B, so yes ये correct है। पूछा गया है कि अलगी के कॉन्ट्रास्टिंग में फंजाई में कौन से कैरेक्टर है, तो फंजाई मल्टी सेल्यूलर है, ये तो सही है, लेकिन अलगी भी तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर नहीं। सेकंड, हैव अ काइटिनाइज्ड वॉल, फंजाई में काइटिन से वॉल बना होता है, लेकिन अलगी के अंदर सेल्यूलर से बना होता है, और अलगी क्लोरोफिलस होते हैं, लेकिन फंजाई नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, तो आंसर जाएगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। Match the column 1 with the 2 and choose the correct combination of the given below. Class 1 and class 2. Class algae and store food material is. So chlorophyll, chlorophytes जो green algae होती है, उनके अंदर जो pigment होता है वो होता है starch, ठीक है, और जो ब्राउन algae होती है उनके अंदर लेमिनेरिन और मैनिटोल होता है, और रेड एल्गी में, रोडोफाइसी में, रेड एल्गी में फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। सो आंसर ऑफ ए विल मैच टू द बी, ए विल मैच टू बी, सो ए और डी में, बी और डी में मैच कर रहा है, एंड बी फियोफाइसी विल मैच टू द सी, मींस थर्ड, सो बी इज मैचिंग टू द थर्ड in a second, so B is matching to the third in a B option, and rhodophytes is matching to the A, floridin starch, so I would say B is the most probably correct. Question number 10, which of the following is a non-flagellated, इनमें से कौन सी फ्लैजेलेटेड एल्गी नहीं है? सो क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा ऑल आर नॉन फ्लैजेलेटेड एल्गी। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11, फ्यूजन बिटवीन अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड, ये हमने ब्रायोफाइट्स में काफी बार पढ़ा, तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर हो जाता है सी, ऊगेमी। क्वेश्चन नंबर 12, पायरोनोइड्स आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, सो क्या है ये पायरोनोइड्स? पायरोनोइड्स जनरली ये अलगी के अंदर पाए जाते हैं, और ये इनका काम होता है समटाइम प्रोटीन प्रोडक्शन, समटाइम प्रोटीन स्टोरेज, स्टार्च स्टोरेज, और समटाइम ऑयल ड्रॉपलेट स्टोरेज, सो ए अलगी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सीवीड्स बिलोंग्स टू, सो आपने रिसेंटली सुना होगा सीवीड्स काफी ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो कर रहे हैं, सो सीवीड्स आर जनरली द टाइप ऑफ अ ब्राउन एल्गी। मैंने आपको ब्राउन एल्गी जब पढ़ा रहा था, मैंने आपको सीवीड्स के डायग्राम भी दिखाए हुए थे, फोटोज दिखाए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, focoxanthin pigment is found in, so as I told you when I was teaching a brown algae, I told you that chlorophyll molecule may be other may be present, but in brown algae fucoxanthin will compulsory present, because fucoxanthin gives a brown color to the algae, so answer is B, brown algae. Question number 15, algae which is used as a food by space traveler, तो मैंने आपको टीचिंग के करते समय मैंने आपको ये पढ़ाया था कि क्लोरेला और स्पिरुलिना, ये जो अलगी हैं जनरली स्पेस में लेके जाते हैं, उसे एरोप्लेन में लेके जाते हैं एज अ फूड मटेरियल फॉर स्पेस ट्रेवलर। मतलब स्पेस ट्रेवलर इवन दो जो हम कह लो कि जो जनरली सैटेलाइट के थ्रू स्पेस में जाते हैं, वो लोग भी ऐसे ही अलगी वगैरह यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे इतना फूड लेके नहीं जा सकते इतना वेट होने के कारण, तो वो क्लोरेला स्पिरुलिना जैसे अलगी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज सी, sorry D, both A and C, chlorella and spirulina both algae. Question number 16, fusion of a two motile male gamete which are dissimilar in size is termed as, तो दो मोटाइल के बीच में फ्यूजन लेकिन वो डिसिमिलर साइज में, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, इट विल बी दी एनिसोगेमी, सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा reproduces vegetative by,
So as I told you guys, near about all the algae by vegetative propagation, they are dividing or they are reproducing by the process of fragmentation. So fragmentation is a unique features among Spirogyra as well as Eulothrix for the asexual reproduction, or you can say special type of asexual reproduction is a what we call vegetative propagation. Question number 18. Match the column with the column 2 and choose the correct combination from the option given. So column 1, column 2. Chlorophyll, chlorophyce means green algae contain chlorophyll A and chlorophyll B. Correct. Phycoerythrin will be present in red algae. So C will match to B and phycocyanide will have a fucoxanthin. So A will match to third. Yes, here. And B, brown algae will match to the brown algae. Phaeophyce will match to the second. So here second is the matching. Correct. Second is matching. Chlorophyce A is matching. And rhodophyce third is matching to the uh, phycoerythrin. So chlorophyce green algae is matching to the chlorophyll A and B. So A is matching to third, and phaeophyce brown algae is matching to chlorophyll A, C and fucoxanthin. So B is matching to the first. So A is moving towards this one, and rhodophyce C is matching to the chlorophyll A, D and phycoerythrin. So answer will be here A. So A is the correct answer. Question number 19. Pyrenoids are located in the. So where the pyrenoids are located? Pyrenoids are located inside the chloroplast of algae, which are responsible for storage of protein and sometimes oil droplets. So chloroplast is the correct answer. Question number 20. Algae are classified into three classes on the basis of. So algae के तीन प्रकार होते हैं, ग्रीन algae, ब्राउन algae और रेड algae. किसके बेस पे होते हैं वो? Type of pigment, types of a food store material, type of a reproduction. So no, answer is A, type of pigment. So question 20 हमारे यहाँ पे हो गए. Question number 21. Mosses grow in the moist and shady places because why mosses grow? Mosses are basically the type of bryophytes. Yes, and they are growing in water just because mosses are requiring water for transport of gamete. So option A, lack of root, wrong. Option B, lack of vascular tissue. This is also wrong. Third, require water for transport of gases. Correct. So mosses are requiring water for transport of gases. Therefore they are growing in moist and shady places. So answer is C. Question number 22. In Funaria, meiosis occurs in. So what is Funaria, guys? Come on. So Funaria is a kind of a bryophytes which are reproducing by the spore mother cell. So C will be the correct answer. Question number 23. In bryophytes, multicellular jacket female sex organ is called. So multicellular jacket doesn't matter. Female sex organ is generally the archegonium. Yes. So here answer is B, archegonium. Question number 24. Vegetative propagation by Gemi occur in. So जेमी के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो जनरली मर्चेंशिया में पाया जाता है. B is the correct answer. Question number 25. Rhizoids of the bryophytes are. So generally rhizoids जो होते हैं bryophytes में वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं. क्यों? कि मैंने आपको पढ़ाया था rhizoids in bryophytes like they are unicellular in liverworts and they are multicellular in mosses, but unicellular in liverworts and multicellular in a mosses. Liverworts and mosses both are type of bryophytes. So answer will be C. Okay, question number 26. In pteridophytes or ferns or Dryopteris, meiosis occurs during. So generally in all these situations, meiosis generally occurs during the spore formation. At the time of spore formation,
meiosis process takes place, because we know that meiosis is nothing but the formation of gametes, and spores are the type of gametes. Question number 26 answer is A. Question number 27. In pteridophytes, well differentiated vascular tissues are found in. So pteridophytes में vascular tissue कहाँ पाए जाते हैं? So pteridophyte में vascular tissue root stem leaves सभी में पाए जाते हैं, because in pteridophyte root stem leaves are true type. Question number 27 answer is D. Question number 28. 28 में क्या होता है? Read the following statement. This is an exceptionally large group of plant occurring in wide range of habitat. Wide range of habitat and largely exponential, exceptional plants. Sorry. Second, they provide us food, fodder, fuel, medicine, and several other commercial important products. So I think so. ये तो एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं. They ranges in the size from tiny, almost microscopic, tall tree over 100 meter. Here we are talking about. तो 100 meter कौन grow होता है? यूकैलिप्टस. यूकैलिप्टस एंजियोस्पर्म है, और फूड, फोडर, मेडिसिन ये सब भी चीजें हमें वहीं से मिलती है. तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. डी will be the correct answer, एंजियोस्पर्म. Question number 29. 29. Which of the following is the characteristic feature of a gymnosperm? तो जिम्नोस्पर्म में से इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक सही है? So gymnosperm are wing seededs, living fossil, naked seeder, multinucleated male gametes. So here I would say answer will be directly naked seed, because हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म में कोई सीड की कवरिंग नहीं होती, they are open seeded or naked seeded. Question number 29 after that 30. Pollen grain in pinus develop inside the. So pollen grain in pinus will develop inside of what? Inside of microsporangium. मैंने आपको कल ही पढ़ाया हुआ था जिम्नोस्पर्म के बारे में. The gymnosperms are the organism in which microsporogenesis takes place, and microsporogenesis is generally found in the pinus. Answer of 30 question number is B. Okay, so question number 31. In cycas or gymnosperm, pollination takes place by. So either it is a cycas or neetum or whatever. Gymnosperm will have only one type of pollination, that is a wind pollination or anemophily you can say. मैंने आपको एक चीज समझाई थी. Gymnosperms are those type of plant in which there is absence of flower, and if flower is absent, then pollination by bat, insect, and butterfly or snail will be totally absent. So pollination will be done by abiotic agent, but here best abiotic agent is a wind, air pollination. So B is answer. Question number 32. In cycas has two cotyledon but not included in angiosperm because it has. Cycas basically have two cotyledon, no doubt, but still it is not included under angiosperm. It is included in gymnosperm only. Why? Because cycas has a naked seeded or open seeded, and all the plant which are basically open seeded, they comes under gymnosperm. So answer of question number 32 will be C. Question number 33. The diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body in alternate with a multinuclear saprophytic autotroph, independent but short-lived haploid gametophyte. This type of pattern is exhibited by. So ये कौन से प्रकार का पैटर्न है? So I'll tell you. See, अगर आप यहाँ पे देखो, the diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant. तो ये vascular plant कह रहे हैं, तो vascular plant basically algae में नहीं होते हैं, ना ही bryophytes में होते हैं. So bryophyte option is wrong. Most of the algae genera, this is also wrong. So answer will be between the B और D. ठीक है, आगे देखते हैं. Vascular plant body and alternate with a multicellular saprophytic autotroph, independent but short lived. यहाँ पे short lived भी बताया and haploid gametophyte बताया. This type of example will be found in Cilia genella and Leucopodium. Answer will be B, pteridophytes. Yes. Question number 34. The giant redwood tree Sequoia supervirens is in. So Sequoia supervirens
सुपरविरेंस इज बेसिकली द टाइप ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। मैंने आपको कहा दुनिया का सबसे बड़ा टॉल ट्री अगर होगा जिम्नोस्पर्म में तो है सिक्यूआ सुपरविरेंस, एंड बाकी सभी ट्री में भी यही है नियर अबाउट। So question number 34 answer D gymnosperm. Question number 35 Wolffia is the member of. As I told you मैंने अभी कुछ दिन पहले Wolffia के ऊपर वीडियो भी बनाया होता। So Wolffia is the smallest angiospermic plant around 0.1 to 0.2. So it is a member of angiosperm. B answer. Read the following statement. हमें स्टेटमेंट रीड करने हैं और उसके बाद हमें क्या सेलेक्ट करना है उसमें से सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम देखते हैं वन बाय वन। The male and female cone or strobili may be born or same tree in Pinus. Correct. मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल कोन या तो स्ट्रोबिलाई कह लो, वो पाइनस में सेम प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। सेकंड, इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। करेक्ट, साइकस में अलग होते हैं ये, और बेसिकली अदर अगर देखें तो पाइनस में होमोस्पोरस होते हैं और साइकस में हेटेरोस्पोरस होते हैं। स्टेम ऑफ अ साइकस इज अ ब्रांच एंड पाइनस एंड सिड्रस इज अनब्रांच। ये वाला भी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। डी देखते हैं। इन जिम्नोस्पर्म जनरली टैप रूट्स आर फाउंड, सेलेक्ट द करेक्ट। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ए बी सी ए बी डी, so B will be the correct answer. Yes, because C is the wrong. Question number 37. Consider the following statement regarding gymnosperm and choose to the correct options. हमें correct option ढूंढना है. So, in gymnosperm, the male and female gametophyte have an independent existence. नहीं, कभी कभी जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल सेम एक्सिस्टेंस भी होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। द मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, ये वाला सही है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस ऑफ द स्टेटमेंट। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर 3 गलत है। सो एक्चुअली जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शन में एक चीज गलत बताई है यहाँ पे जो बताया वो उन्होंने। ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 आर फॉल्स, ऐसा होना चाहिए। तो हम डी की तरफ चलते हैं। तो डी में आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर ट्रू। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन 1 और 3 दिया है ना, तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर ट्रू। ऑप्शन 1 एंड सेकंड आर ट्रू बट थर्ड इज फॉल्स। तो ऑप्शन ये वाला आंसर सही है, लेकिन गलती से ये वाला हो गया यहाँ पे। सो आप इसे थोड़ा करेक्शन कर लेना। सो आंसर इज ए एक्चुअली है। क्वेश्चन नंबर 38. A dominant independent photosynthetic thalloid erect phase is represented by haploid gametophyte and its alternate with a short-lived multicellular sporophyte totally partially depend on the gametophyte for its anchorage and nutrition. Nutrition है ये, and this type of pattern is represented by. So ये जो representation है वो किसका है? अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे हमें ऐसे बड़े बड़े जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड सिलेक्ट करने होते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया उन्होंने थैलोइड। तो थैलोइड ऑब्वियसली कौन से प्लांट होते हैं? थैलोइड 2 ही प्लांट होते हैं, या तो अल्गी होते हैं या तो ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द अल्गी यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ये ऑप्शन हो सकता है। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट तो आंसर नहीं है, ब्रायोफाइट्स भी हो सकता है। तो ए और डी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं। और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट्स अल्टरनेट विद अ शॉर्ट लाइव मल्टीसेल्युलर सेप्रोफाइट।
तो यहाँ पे इरेक्ट जो कहा है मतलब स्पेशली स्ट्रेट हाइट होना प्लांट की, तो प्लांट की स्ट्रेट हाइट होना मतलब ये अलगी तो नहीं होंगे, तो ये थैलॉइड भी है और इरेक्ट भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। So A is the correct answer of question number 38. Question number 39. In Pinus, male cone is made up of. So male cone will be always indicated by the microsporophyll, because micro means small and sporophyll means spore producing organ. So microsporophyll, A will be correct answer of question number 39. Question number 40. Vascular cryptograms. अभी आप क्वेश्चन में देखिए दो चीजें उन्होंने कही है, एक तो कहा है वॉस्कुलर, वॉस्कुलर मतलब वो वाले प्लांट होते हैं जो जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम अवेलेबल होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम किसके अंदर अवेलेबल होते हैं? जाइलम फ्लोएम होते हैं एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम, तो क्रिप्टोगैम कौन होते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग वाले प्लांट होते हैं। तो उन्होंने कहा है वॉस्कुलर भी होना चाहिए, मतलब जाइलम फ्लोएम भी हो और प्लस क्रिप्टोगैम भी हो, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग वाले। तो ये तो एक ही एग्जांपल होता है उसका, टेरिडोफाइट। तो अभी हमें इसमें से ढूंढना है टेरिडोफाइट कौन सा है। वोल्फिया ये एंजियोस्पर्म है, जिंको बायोलोबा ये जिम्नोस्पर्म आते हैं, इक्विसिटियम ये टेरिडोफाइट्स आते हैं और सनफ्लावर ये एंजियोस्पर्म आते हैं। सो आंसर हमारा हो जाएगा सी। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या होता है। Question number 40 is asking us that vascular cryptogam is. So vascular means the plant in which xylem and phloem tissues are found, and cryptogam means the plant which have a basically what spore. So vascular tissue will be present in angiosperm, gymnosperm and pteridophyte. But here they are asking vascular and cryptogam. So vascular tissue should be there and plus it must be spore producing plant. So vascular plus cryptogam will be only pteridophyte. But here Wolffia is an example of angiosperm, Ginkgo biloba is a living fossil of gymnosperm, and Equisetum is an example of vascular plant, and sunflower is an example of angiosperm. So question number 40 answer will be C, Equisetum. Question number 41. Which of the following set belongs to the same class of algae? तो इनमें से कौन से algae same class में आते हैं? So generally, if you say Ictocarpus, Ulothrix, and Sporifera, they are not belongs to the same algae. Chara is a green algae and Fucus is actually brown algae. They are not matching. Sorghum is a brown algae. Gracilaria is a red algae. But Chlamydomonas green algae, Spirogyra is a green algae, and Volvox is also green algae. So this will be the correct combination. So D will be the correct answer. Question number 42, which is incorrect with respect to Bryophytes. Bryophytes को compare करके इनमें से कौन सा statement incorrect है? Fertilization takes place in presence of water. It will be correct because Bryophytes are requiring water for fertilization and completing life cycle. A statement is correct. True stem, leaf and roots are not found in Bryophytes. Correct है. Bryophytes में ये भी नहीं होते हैं. Zygote undergo meiosis to produce haploid spore. हमें क्या पूछा गया है इन्होंने? Incorrect. So zygote undergo meiosis to produce haploid spore. No, ये सही नहीं. Zygote undergo mitosis to produce sporophyte. So C will be the correct answer. Question number 43. In liverworts, the specialized asexual reproductive structures are called. So liverworts के अंदर specialized asexual structure जो होते हैं वो होते हैं Gemi, because Gemi undergo asexual reproduction and turn into the new plant. It is also same like a budding process. Question number 41. Vascular plant lacking vessel and companion cells. Companion cell and lacking vessels plus vascular plant. So vascular plant will be angiosperm, pteridophytes and gymnosperm. Bryophyte तो आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन हमें ये पूछा गया है कि कंपेनियन सेल और बेसिकली वेसल ये नहीं है, तो कंपेनियन सेल और वेसल नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाता है जिम्नोस्पर्म. सो डी जिम्नोस्पर्म इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. Pteridophytes are also called vascular cryptogam as they are non-seeded plant containing only xylem, only phloem, neither xylem nor phloem, xylem and phloem. तो बेसिकली 45 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर है वो है डी, बिकॉज xylem phloem दोनों पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में. क्वेश्चन नंबर 46. एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स आर, तो ये तो कॉमन है, इसमें सबसे इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा है. Bryophytes are generally amphibian of plant kingdom. Question number 47. Which is not character of Bryophytes? Not character पूछा गया 2013 में नीट में पूछा गया. They may be thyroid or vegetative plant body.
ये तो करेक्ट है। दे possess multicellular sex organ, तो multicellular sex organ होते हैं उनमें। They need water for sexual reproduction, obviously they are amphibian plant. Next, they possess well differentiated vascular tissue. Vascular tissue are directly absent in bryophytes, so why they would be used for differentiating vascular tissue? D will be correct answer. Question number 48. Match the column 1 with the column 2 and choose the correct combination from the given below. तो हमें 48 में मैच द पेयर करना है। अल्गी, अल्गी क्या होते हैं? अल्गी आर ऑटोट्रोपिक, सो A is matching to R. Rixia, Rixia is an example of, come on, Rixia is an example of liverworts, so B will be matched to S. B will match to S. A will match to R and B will match to S. And mango is an angiosperm. C will match to Q. C will match to Q. And Neetum belongs to Gymnosperm. So D will match to Gymnosperm. So A will be the correct answer. Question 49 फिर से मैच द कॉलम है और हमें फिर से मैच करना है। क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा actually belongs to Chara. Leucopsida, it belongs to the Selaginella. And Phaeophyta belongs to Ectocarpus. And D, Spinopsida belongs to the Equisitum. So ये भी फिर से A आंसर हो जाना है। Question number 50. Mosses and ferns are found in moist and shady places because they require presence of water for fertilization, do not need sunlight for photosynthesis, depend on their nutrition on microorganisms which can survive only up to low temperature, cannot compete their sun living plants. No, आंसर ए हो जाएगा इसका, requires presence of water for fertilization. So ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चन और ये टॉपिक था हमारा चैप्टर 3 प्लांट किंगडम 11 स्टैंडर्ड CBSE 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ फॉर नीट प्रिपरेशन, प्रैक्टिस योरसेल्फ, इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट स्टूडेंट, स्कोर 316 बायोलॉजी. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.